हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी स्टार्टर पॉइंट इज गिवन। सी द पिक्चर एंड मार्क द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और मार्क करना है अंडरलाइन वर्ड्स को। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इमेजेस दे रखी है। सो द सेंटेंस आर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस वॉज डिक्लेयर्ड अ पेंडेमिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th March 2020. The novel virus was first identified in Wuhan, China in December 2019. Its symptoms included fever, dry cough, fatigue, severe illness and short breath. सो आपने देखा यहाँ पर कुछ बोल्ड लेटर में, यानी कि आप देख सकते हो डार्क ब्लैक में आप कुछ लेटर्स देख सकते हो, कुछ वर्ड्स देख सकते हो। ठीक है, सो ऑल दीज अंडरलाइन वर्ड शो द एक्शन इन पास्ट टेंस। तो जो भी अंडरलाइन वर्ड है ये क्या दिखा रहे हैं, ये वो एक्शन दिखा रहे हैं जो कि पास्ट टेंस में हुई है। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक इज पास्ट टेंस। द पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन पास्ट टाइम। पास्ट टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन को जो कि पास्ट टाइम में हो चुका है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी पास्ट टेंस चार्ट इज गिवन। सो इन द सिंपल पास्ट टेंस द एग्जांपल इज गिवन आई सैंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आई के साथ सैंग वर्ड का यूज किया गया जो कि पास्ट टेंस है। किसका पास्ट टेंस फॉर्म है, कौन से वर्ड का, सिंग का। ठीक है, नेक्स्ट वन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल आपको दिया है आई वाज सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट टेंस I had sung. Okay, थर्ड फॉर्म यूज किया गया यहाँ पर वर्ब का। नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस I had been singing. Let us learn about the first three past tense in detail. तो पहले के तीन past tense के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। So the first type of past tense is simple past tense. The simple past tense is the basic form of the past tense. ये एकदम basic form है past tense का। The simple past tense is used to express actions, events in the past. ये हम use करते हैं actions को express करने के लिए, events को express करने के लिए past में। For example, I met her yesterday. He came here last week. नेक्स्ट थिंग टू एक्सप्रेस सिंगल एक्शन इन द पास्ट। एक सिंगल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं जो कि पास्ट में हो चुकी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी ओपन द डोर अगेन, हार्दिक हिट अ सिक्स अगेन। नेक्स्ट वन टू डिनोट सम पास्ट हैबिट्स। कुछ पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आई ऑफन रिटायर टू बेड एट 9 PM ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। नेक्स्ट वन शी ऑफन प्लेड द पियानो इन द इवनिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट। मतलब वो एक्शन जो कि शुरू हुआ था पास्ट में और खत्म भी पास्ट में ही हुआ था, जैसे कि आई वर्कड इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2009 to 2013. नेक्स्ट वन शी स्पेंड हर चाइल्डहुड इन हर अंकल्स होम। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वो एक्शन है जो कि शुरू हुए थे पास्ट में और खत्म भी पास्ट में हुए थे। ओके, नाउ हियर यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, the simple past tense, rules and the examples. For all nouns and pronouns, पहला रूल आपको दिया है use the root form of the verb plus ed. root form of the verb यूज करना है, उसके साथ ed को ज्वाइन करना है past tense क्रिएट करने के लिए, simple past tense क्रिएट करने के लिए, जैसे कि I played, we worked. Okay, now next thing, make some necessary changes in the root form of the verb before adding ed. कुछ नेसेसरी चेंजेस हमें करने हैं रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ईडी को ऐड करने से पहले, जैसे कि शी ट्राइड, इट हॉप्ड। नेक्स्ट वन चेंज वन और मोर लेटर्स इन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुछ एक या दो लेटर हम चेंज करेंगे इन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, जैसे कि ही फ्लू अ काइट। ओके, नेक्स्ट वन सम वर्ब्स डोंट चेंज। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं, जैसे कि शी कट एन एप्पल। नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। Now the next type of past tense is past continuous tense. The past continuous tense is used to describe an action that was in progress in the past. ये वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि प्रोग्रेस है, जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में चल रहा है इन द पास्ट। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है विनय वाज ड्राइंग अ पिक्चर। ओके, नेक्स्ट वन सुमन एंड मेघा वर सिंगिंग अ सॉन्ग।
Next one, Suman and Megha were singing a song. Next thing is to show that something was going on and suddenly something happened. कुछ ऐसी चीज दिखाना जो चल रही थी और suddenly कोई चीज हो गई, अकर हो गई. For example, Madhu was playing the piano when Gunjan called her. ठीक है? They were eating their meals when Anmol called them. Next thing is to describe two or more actions going on at the same time. दो या उससे ज्यादा एक्शन को डिस्क्राइब करना जो कि चल रहे हैं सेम टाइम में. ठीक है? For example, while Madhu was singing, her brother was dancing. Next one, while Rajat was reading a book, Manas was watching TV. Now here comes the box one, that is formation of past continuous tense. So here you can see the past continuous tense rules and the example. Okay, with I, he, she, it and singular noun, rule hai use was plus the root form of the verb plus ing. Okay, she was singing. Next thing, with we, you, they and plural form, use were plus the root form of the verb plus ing. They were working in the field. ओके, समटाइम्स द स्पेलिंग्स आर चेंज बिफोर एडिंग आईएनजी. कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है आईएनजी को ऐड करने से पहले. ठीक है, जैसे कि ही वाज राइटिंग अ लेटर. ओके, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. We use the past perfect tense, first one, to talk about an action that took place before another action began in the past. मतलब उस एक्शन के बारे में बात करना जो पहले हो चुका था एक एक्शन के होने से पहले. ठीक है. For example, the patient had died when the doctor reached. Next one, the rain had stopped when I went. Next thing is to talk about an action that was completed before at the some point in the past. ओके, मतलब उस एक्शन के बारे में बात करना जो कि पहले हो चुकी थी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल हैड बॉट अ न्यू कार. नेक्स्ट वन, द अदर डे शी हैड कुक डिनर बाय 8 PM. ओके, नाउ हियर यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. So for all nouns and pronoun, rule is use had plus past participle form of verb, that is a third form of the verb आपको use करना है. Note the past participle form of verb end in ed, d और en और t. ठीक है, past form जो है या तो d में या ed में या en में या t में end होने चाहिए. ठीक है, for example, I had finished my homework. Okay. Now student इसी के basis में आपको exercise दी गई है जो कि आपको अच्छे से complete करना है. Now let's move into the next type of tense, that is past perfect continuous tense. So the past perfect continuous tense is used to express an action that started in the past and continued up to some time. मतलब उस एक्शन के बारे में बात करना जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है कुछ टाइम पीरियड तक. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैड बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर 5 years. ओके, नेक्स्ट थिंग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. एक कोई पास्ट एक्शन के होने से पहले कोई एक्शन पहले से चल रहा था. ठीक है, जैसे कि शी हैड बीन वॉकिंग 2 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग. ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो टेबल दिया है. द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन, रूल है use had plus been plus verb with ing1. For example, I had been singing for 2 hours. ओके, तो आप देख सकते हो had been का यूज किया गया है, ing का यूज किया गया है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज भी दी गई है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.